potential minus 70 millivolt. Potassium ion is free to go out and come in. ये बाहर जाना अंदर आना ये सब definitely potassium और sodium gated channel से ही होता है. In the brain more is the surface area for the neurons to be present. जितना ज्यादा surface area बढ़ेगा उतना ज्यादा neurons का number बढ़ेंगे. The function of hypothalamus, it has 4 major functions. Number 1, osmotic balance. Number 2, temperature balance. Number 3, hunger center. Number 4, thirst center. Apneustic center, pneumotaxic center. These two are the main functions of pons varoning. Hello future doctors. I am your UJJAL sir. Today I am going to start with one short video on neural control and coordination. आपके सामने one shot on neural control and coordination. चलो बहुत सारे वीडियो हमने बना लिए हैं. You can just watch on them and write your notes, make your notes, कॉपी रखकर वो नोट्स बनाओ और आज अभी एक कॉपी निकाल के पेन निकाल के start writing whatever informations I'll be giving it to you. Fine. So let us start with one short video on the nervous system. Fine. One short video में total idea, whatever information that we can give it to you, I'm going to give it to you. See, when we talk about nervous system, जब हम nervous system के बारे में बात करेंगे, so nervous system, what is the unit of it? The unit of nervous system is neuron. So the unit of nervous system is neuron. और मतलब क्या है? और मतलब unit. So unit of nervous system is neuron. So this is the neuron. It's a diagrammatic view. Never ever make this kind of diagram in your examination about neuron. So a neuron is having three portions. The first part is called cyton. The next part is called axon. And this is synapse. This is synapse. So what is synapse? Synapse क्या है? Synapse क्या है? It is the junctional gap between two neurons. दो न्यूरॉन के बीच में junctional gap को क्या कहते हैं? Synapse कहते हैं. Normally we know that the synapses are three different types. One is axo-axonic, axodendritic, and axosomatic. Fine. Who discovered synapse? Comment me in the comment section. Who discovered synapse? Comment me in the comment section. Waiting for your comments. Okay. Now, ये axon के ऊपर sometimes what they can have is myelin sheath. Sometimes they don't have that. अगर myelin sheath है, we call this nerve or neuron as myelinated neuron. क्या कहते हैं? Myelinated neuron. अगर myelin sheath नहीं है तो क्या कहेंगे? Non-myelinated neuron. So ये myelinated neuron में क्या है? यहाँ पे एक सेल है. The cell is called Schwann cell. क्या कहते हैं? The cell is called Schwann cell. Fine. And comment me in the comment section. अगर ये myelin sheath है, if this is myelin sheath, अगर ये myelin sheath है, what is the composition of it? ये बना किससे है? It is made up of what? Comment me in the comment section. What is? I'm giving you some hints. It's a type of conjugate fat. It's a type of conjugate fat. Normally we know under biomolecular topic we have studied three different types of fat. Some different fat के समझ में पढ़े हैं. एक simple fat, एक conjugate fat, एक derived fat. It's a type of conjugate fat. Tell me the composition. That is again another question. Comment me in the comment section. Okay, what are these? These are dendrites. क्या है ये? Dendrites है. और dendrites का function क्या है? To receive the stimulus. कौन सा stimulus? So earlier videos also we have talked about क्या है वो स्टिमुलस? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ये यहां से ग्रैब करके यहां पे देते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सॉन हिलम. और यहां से इंफॉर्मेशन कहां पे जाता है? एंटायर एक्सॉन में. क्या होता है एंटायर एक्सॉन में? इलेक्ट्रिकल. एंड साइनैप्स में क्या होगा? केमिकल. साइनैप्स में केमिकल. सो व्हाट काइंड ऑफ इंपल्स इज normally runs through neuron is electrochemical impulse. Okay. Now so यहाँ पे क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे एक्सोप्लाज्म है, and these points are called nodes of Ranvier. क्या कहते हैं? Nodes of Ranvier. So basics idea. Nodes of Ranvier. Fine. Now कौन सा ज्यादा फास्ट है? न्यूरॉन में स्टिमुलस कौन सा फास्टेस्ट है? माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड? You know always myelinated nerve fibers shows speedy conductions. Now कितने टाइम्स ज्यादा है? Close to 50 times ज्यादा है. आप जानते हैं. Now this is about neuron.
What is most important about neuron is how the transmission of nerve impulse takes place. So nerve impulse एक बार threshold stimulus ले लेने के बाद कौन लिया threshold stimulus? Who has taken the threshold stimulus? It's the dendrites has received the threshold stimulus and then it passes on the stimulus to the और यहाँ पे सब क्या होगा ट्रिगर होगा. ये ट्रिगर जोन है कॉल एक्सॉन हिलॉक और यहाँ पे एक्सोप्लाज्म में नॉर्मली कौन ज्यादा रहता है K प्लस. संग में कौन कौन है Cl माइनस HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयंस. संग में फॉस्फेट्स भी है. There are phosphates also. अगर ये axon है, this axon, in the exoplasm, these are present in much more concentration. If you compare it with sodium ion, sodium ion कहाँ पे ज्यादा रहता है? The sodium ions are present outside the axolemma. What is axolemma? It is the outermost covering of the axon. Is called axolemma. So sodium present बाहर ज्यादा है, तो बाहर क्या मेंटेन होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. बाहर क्या मेंटेन होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. अंदर क्या मेंटेन होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड दिस कंडीशन अगर गैल्वेनोमीटर से इसको मापा जाए तो क्या देखेंगे? इन रेस्टिंग कंडीशन द रेस्टिंग पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट. कितना? रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट. जब न्यूरॉन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, when the neuron is not receiving any threshold stimulus. Now the moment threshold stimulus आ गया, what is going to happen is depolarization is going to occur. Normal conditions में इसको क्या कहेंगे हम? Polarized state. क्या कहेंगे? Polarized state, polarized condition. इस polarized condition में sodium ions permeability is very less, but potassium is free to go out and come in. Potassium ion is free to go out and come in. ये बाहर जाना अंदर आना ये सब डेफिनेटली पोटेशियम और सोडियम गेटेड चैनल से ही होता है. फाइन, ओके. नाउ ये पोलराइज्ड स्टेट में था. द मोमेंट द न्यूरॉन्स रिसीव्स द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, क्या होने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर विल बी चेंज इन द पोलराइजेशन. सडनली ये जो सोडियम आयन बाहर जो थे, दे आर गोइंग टू स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड द एक्सोप्लाज्म. द मोमेंट दे आर गोइंग टू स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड एक्सोप्लाज्म, अंदर क्या होने वाला है? इन द लोकल एरिया सोडियम अंदर आ गया तो क्या होगा? पोटेशियम इज गोइंग टू गो आउट. पोटेशियम इज गोइंग टू गो आउट. और जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा, सोडियम आयंस परमिबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज सम 20 टाइम्स दैन नॉर्मल. सो नॉर्मली सोडियम आयन एंटर नहीं कर सकता है, बाहर से अंदर नहीं आ सकता है. फॉर दैट टू गेट इनसाइड द एक्सोप्लाज्म इट नीड्स अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. इसको क्या चाहिए? एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए. तो यहां पे अंदर आ गया तो बाहर पोटेशियम चला गया तो क्या होगा? बाहर नेगेटिविटी. बट दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन ओनली द लोकल एरिया ऑफ द एक्सॉन. बाद बाकी एक्सॉन में जैसा था पहले इनिशियल स्टेज में, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, यही स्टेट रहने वाला है. बिकॉज बाहर सोडियम आयन ज्यादा है, बाहर सोडियम आयन ज्यादा है. सो दिस वाज देयर इन पोलराइज्ड कंडीशन स्टेट. और यहां पे क्या हो गया? डीपोलराइजेशन हुआ इन ओनली द लोकल एरिया ऑफ द एक्सॉन. And now क्या होगा? देखो यहाँ पे Cl minus and HCO3 minus they won't be able to come out. Fine, but potassium ion ये क्या होगा? जब सोडियम आयन अभी क्या होगा? This positivity is going to attract this negative is going to attract this positive is going to attract this negative, and इसमें क्या होगा? Shuffling होगा charges का. And what is going to happen next? Is sodium ion will start entering again. Sodium ion will start entering again. जब सोडियम आयन अंदर आ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे पहले से पॉजिटिव था ना, वो अभी क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा. बाहर पॉजिटिव, बाहर क्या ज्यादा है अभी? K प्लस. अंदर कौन आ गया? Na प्लस. और अभी ये जो Na प्लस अंदर गया, so now this Na प्लस will come in and make what? Make the polarity. Make the polarity. यहाँ पे पॉजिटिविटी, अंदर नेगेटिव, बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव. बाहर कौन आ गया? K प्लस. बाहर कौन आ गया? K प्लस. And this is going to pass over to the entire axon length. This depolarization is going to pass over the entire axon length. अगर गैल्वेनोमीटर में देखेंगे, पहले था यह कहां पे? -70 मिलीवोल्ट पे. That was called as resting membrane potential. But अब कहां पे आ जाएगा? ये +30 मिलीवोल्ट में आ जाएगा. +30 मिलीवोल्ट is called as the action potential. Why this is called action potential? क्यों कहते हैं इसको action potential? Because the action of the neuron has started off. Clear? And that is called action potential. So ये depolarization state है. ये क्या कहेंगे हम इसको? The second process is called
depolarization. And what is going to happen next? जब depolarized condition हो गया, बाहर क्या है? बाहर अभी पोटेशियम ज्यादा है, but also the polarity has been maintained. Polarity maintained हो गया, बाहर positivity, but ionic balance has been shifted. अंदर आ गया सोडियम आयन, तो अंदर क्या दिखा रहा है? नेगेटिविटी. ओके, सो क्या होगा अभी इस मोमेंट पे? डू यू थिंक अगर गैल्वेनोमीटर में देखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये कहां पे है? -70 में नहीं है, कहां पे है? +30 मिलीवोल्ट. दैट मींस +30 मिलीवोल्ट. दैट मींस द न्यूरॉन इज नॉट रेडी टू रिसीव एनी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. इस समय में इसी टाइम पे अगर न्यूरॉन को, इफ द न्यूरॉन रिसीव्स एनी टाइप ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, द न्यूरॉन इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड. सो इसको क्या करना है? रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या करना है? सोडियम आयन जो अंदर अभी घुस गया, इसको निकालना है बाहर. फॉर दैट व्हाट इज नीडेड? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैज टू ऑकर. और वहां पे है सोडियम एंड पोटेशियम गेटेड चैनल. और ये गेटेड चैनल में क्या होगा? एटीपी यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी. एटीपी यूज करके 3 सोडियम को धक्का मार के बाहर निकाला जाएगा. 3 सोडियम विल बी पुश्ड आउट and 2 potassium ions should be pushed in. So what is the ratio? Sodium is to potassium 3:2. 3 सोडियम को बाहर निकाला जाएगा धक्का देकर, और एटीपी यूज करके 2 पोटेशियम आयन को अंदर डाला जाएगा टू मेंटेन अगेन द पोलैरिटी, ताकि बाहर क्या रहे? सोडियम आयन ज्यादा रहे, अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा रहे. And this was there in the earlier on. So ये जो पोलराइजेशन एटीपी यूज करके जो हमें धक्का लगाना पड़ा, 3 सोडियम को बाहर निकालना, 2 पोटेशियम को अंदर धकेलना, that process is called repolarization. क्या कहते हैं? This step is called repolarization. Okay? जब repolarization हो गया, पहले जैसा कंडीशन प्लस बाहर, अंदर माइनस प्लस, and also so polarity has been maintained. Along with polarity, what has been maintained is ionic balance has been maintained. This is about nerve impulse transmission through axon. What happens in synapse? Synaptic nerve transmission में ये जो knob है, this is the knob, synaptic knob, और ये जो membrane है, ये membrane को क्या कहते हैं? Pre-synaptic membrane. और यहाँ पे क्या है? Synaptic vesicles, which contains neurotransmitter in the form of acetylcholine or dopamine or serotonin, fine, और GABA. GABA क्या है? न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर. और ये तीनों जो पहले डोपामिन, सेरोटोनिन एंड एसिटाइलकोलिन, these are what? Excitatory neurotransmitters. We have done this already in the earlier videos. Okay, so what is going to happen? ये जो depolarization यहाँ पे आ गया सोडियम आयन अंदर आने से, it is going to give the impulse to the synaptic vesicles, which are nothing but the modified Golgi bodies. And then what is going to happen? It is going to secrete out the neurotransmitters. जब न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? पहले से कौन है? और एक न्यूरॉन है, से वो डेंड्राइट है, तो ये एक्सोडेंड्राइटिक है. द गैप बिटवीन टू इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट. और यहाँ पे देयर आर सम व्हाट? रिसेप्टर्स, एंड दीस रिसेप्टर्स आर कॉल्ड कैल्शियम गेटेड रिसेप्टर्स. ये कैल्शियम गेटेड रिसेप्टर में जब ये न्यूरोट्रांसमीटर आकर ज्वाइन करेंगे, द मोमेंट the neurotransmitter will come in contact with the neuron or with the calcium gated channel, the calcium gated channel is going to open up. The calcium gated channel is going to open up like this. ये देखो calcium gated channel open हो गया. And what is going to start entering? Calcium is going to start entering from here. The moment the calcium enters into the next neuron, the same stimulus जो पहला न्यूरॉन में मिला था, वही same stimulus अभी second neuron में जाएगा, and this is going to continue with every neuron, और ऐसे पैसेज करते वो ब्रेन तक जाएगा, and that is called sensory neuron, जो रिसीव करके ब्रेन पे लेके जाएगा, और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर मसल्स काम करना स्टार्ट कर देगा. So that is it. This is how the nerve impulse transmission takes place, which is there in your NCERT. Now, what is most important about nervous system is about the nervous system. We can classify them into mainly 2 parts. What are they? The first one is central nervous system. The second one is peripheral nervous system. अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है. वन इज पेरिफेरल
सेंट्रल और पेरिफेरल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल? सेंट्रल मतलब जो सेंटर में है. कौन सा सेंटर में है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में है. और पेरिफेरल मतलब क्या है? साइड में. साइड में पेरिफेरल. साइड में पेरिफेरल. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब think about it. Under peripheral, one of them is what? One of them is voluntary and the one is involuntary. Voluntary and involuntary. Under involuntary, that is autonomic nervous system. That is autonomic nervous system. Let us start with the central nervous system. Central nervous system. Normally we can classify them into two. What is that? Brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Now, when we talk about brain, the study of brain is called encephalology. The study of brain is called encephalology. ये encephalon नाम से आया है brain. Encephalon is the term for brain. अब brain तीन तरह के होते हैं. There are three parts of the brain. One is forebrain, midbrain, and hindbrain. Fine, and hindbrain. Forebrain is called prosencephalon. Prosencephalon or encephalon. Prosencephalon. Midbrain is also called as mesencephalon. Mesencephalon. And hindbrain is also called as rhombencephalon. 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 Now we know that forebrain we can classify them into two. Forebrain we can classify them into two. What is that? One is forebrain. One is cerebrum. What is cerebrum? And the one is what? Diencephalon. Diencephalon. और diencephalon, di मतलब क्या है? दो है. So one is thalamus, one is hypothalamus, and one is thalamus, and the one is thalamus. Just get in the detailed video जो हमने एक forebrain के सामने we have given you. I've made another video only on forebrain. Just go through that. I'm just making in one shot. I'm giving you the idea. Mesencephalon दो तरह के होते हैं. One is cerebral peduncle and corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina. That is midbrain. Midbrain का भी अलग से वीडियो है. Just click on the I button and see the midbrain section. Only midbrain का अलग वीडियो है. Hindbrain have three different types. One is medulla oblongata, one is pons varoli, and cerebellum. Cerebellum is called as the little brain. It is called as the little brain, and cerebrum is the largest brain. Is the largest part of the brain. Okay. So ये था about brain, and सबका functions अलग-अलग है. Just go through in my earlier videos to have that. Fine. I'm just giving you the idea about some, like cerebrum. The moment we talk about cerebrum, cerebrum का function क्या है? Cerebrum में दो portion बहुत important है. अगर ये skull है, the skull is also called as cranium. और skull के अंदर क्या रहता है? Skull के अंदर रहता है. This is the what? What is this? This is the cerebral hemisphere. Or those cerebral hemispheres, they are connected by corpus callosum. They are connected by corpus callosum, which is a unique feature of all mammalian brain. Unique feature of all mammalian brain. Fine. Now, ये इसके बाहर, brain के बाहर और within the cranium. Brain के बाहर और within the cranium, what is present? ये है meninges. ये है meninges. Meninges is the second covering after skull. First, second is meninges, and this meninges इसका तीन covering है from outside to inward. The three coverings. उसके बाद है cerebrum. Fine. There are three coverings, and these three coverings are called DAP. D-A-P. Dura mater, arachnoid, pia mater. Now, dura mater, arachnoid के बीच में the gap is called subdural space. Between arachnoid and pia mater, the gap is called subarachnoid space. And this gap contains cerebrospinal fluid. It contains cerebrospinal fluid. Cerebrum and spinal, completely cerebrum or spinal cord. That means central nervous system consists of cerebrospinal fluid. And comment in the comment section, cerebrospinal fluid is produced from some plexus. What is that? Comment in the comment section. Dash and dash plexus. Already हो गया है ये in the earlier videos. Just check it out. Those who know it, just answer me. Comment in the comment section. Okay. These three together is called what? Meninges. और यहाँ पे disease होता है. If the meninges increases and there is the inflammation in meninges, we call it meningitis. क्या कहते हैं? Meningitis.
Inflammation in meninges is called meningitis. Itis मतलब क्या है? Itis means inflammation. Itis means inflammation. Inflammation in the meninges is called meningitis. Okay. Now ये जो cerebrum में ये जो curves हैं, ये curves को क्या कहते हैं? This is called gyri and salsi. This is gyri and this is salsi. Crest को कहते हैं gyri and depression को कहते हैं salsi. More than the gyri and salsi. ये gyri में क्या रहता है न्यूरॉन का? Only cytosol is present. The entire axon is present in the white matter. So ग्रे मैटर किस तरफ है? ग्रे मैटर है जहां पे न्यूरॉन का साइटोन है, वहां उसको कहते हैं ग्रे मैटर. एंड एक्सॉन जिस तरफ है उसको कहते हैं व्हाइट मैटर. मोर द gyri and salsi in the brain, more is the surface area for the neurons to be present. जितना ज्यादा सर्फेस एरिया बढ़ेगा उतना द न्यूरॉन्स का नंबर बढ़ेंगे. The more the number of neurons, the more intelligence that person is. Okay. Now this is about cerebrum. Cerebrum का फंक्शन क्या है? It stores all the past memory, past experiences, voluntary actions done by, or voluntary functions done by cerebrum. Fine. Cerebrum also helps in what? Skill center. So, and in depth we have talked about cerebrum. You can just check it out in the forebrain section. Forebrain का वीडियो का देख लेना. तो ये था cerebrum के बारे में. This was cerebrum. Under diencephalon, hypothalamus. Hypothalamus. What is the function of hypothalamus? It has four major functions. Number 1, osmotic balance. Number 2, temperature balance. Number 3, hunger center. Number 4, thirst center. Fine. Just go through that video. Hypothalamus. Thalamus का function क्या है? It connects between forebrain and midbrain. Come down to midbrain का part corpora quadrigemina. Quadrigemina. Quadri मतलब क्या है? 4 point. So quadri means 4. So 2 of them, they help in what? Visual, and rest 2 helps in audio. So audio visual reflex is done by corpora quadrigemina. Civil product also connects between midbrain and hindbrain. Come down to medulla oblongata. Medulla oblongata, इसका मेन 2 functions है, आप जानते हो already under respiratory system and circulatory system आपने पढ़ लिया. Medulla oblongata acts as a respiratory center, also it acts as a cardiac center. Fine, because it maintains what? It maintains the rhythm. Not only rhythm, it also gives the information to the heart and also to the lungs to do its functions. Okay. When we talk about pons varolii, pons means what? Pons means bridge. It's a bridge between medulla oblongata and cerebellum. Fine. Now think about it. ये pons varolii का main function है क्या? It maintains a rhythm. So there are 2 centers we have talked about in the earlier video. Just check it out. One is apneustic center and pneumotaxic center. Apneustic center, pneumotaxic center. These 2 are the main functions of pons varolii. When we talk about cerebellum, cerebellum का function क्या है? It helps in maintenance of body balance and maintenance of body posture. Body posture, body balance maintain करना cerebellum का function है. Fine. And also, come on, ये तीनों में से किसका function है? About involuntary functions. Comment me in the comment section. Check it out first in the earlier videos. Okay. So that was about the brain. Spinal cord का function क्या है? आप जानते हो spinal cord और cerebrum का main difference क्या है? cerebrum में क्या है? ग्रे मैटर बाहर, व्हाइट मैटर अंदर. मतलब न्यूरॉन का साइटोन बाहर और एक्सॉन अंदर. बट दैट इज जस्ट गोइंग टू बी रिवर्स इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड में अंदर होगा ग्रे मैटर, बाहर होगा व्हाइट मैटर. यहां से यहां पे स्किन है, स्किन पे कोई मच्छर काट रहा है. सो दिस इंफॉर्मेशन विल बी टेकन अप बाय सेंसरी न्यूरॉन एंड देन देयर इज अ रिले न्यूरॉन. इंटरन्यूरॉन कहते हैं. उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? मोटर न्यूरॉन में. ये बाइसेप्स है. तो बाइसेप्स कांटेक्ट करेगा. ये मोटर न्यूरॉन है. मोटर न्यूरॉन इज गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द बाइसेप्स. हाथ उठा के आप मच्छर को मारोगे. सेंसरी, रिले और इंटरन्यूरॉन एंड देन मोटर न्यूरॉन. These 3 together makes reflex action. So what is reflex action, which is done by spinal cord? Reflex action का function क्या है? It is sudden immediate response to a stimulus is called reflex action. What is reflex arc? Reflex arc is the pathway through which reflex action takes place. ये बीच का canal कहते हैं. What is the canal cord? Just tell me. What is the canal cord? Clear? This is about spinal cord. So here I've given you a little bit of idea about what? Central nervous system. Come down to the next one. What is that? Peripheral nervous system मतलब autonomic or what is autonomic? Which is classified into 2, sympathetic and parasympathetic. And then under that क्या मिलेगा? हमें? Come on. Peripheral मतलब क्या है? Voluntary. That means voluntary है एक और एक है visceral. एक है voluntary और एक है visceral. Under voluntary
क्या क्या जाएगा? Cranial nerve and spinal nerve. Cranial nerve we have talked about. Cranial nerve we have already talked about. Under cranial nerve, how many pairs are there? 12 pairs. And we have talked about the 12 pairs. Upta phagua. Just go through the earlier video. Upta phagua. इसमें ये 10th cranial nerve है vagus, longest cranial nerve. Trigeminal 5th cranial nerve is the largest cranial nerve. Pathenic or trochlear is the 4th cranial nerve, which is the smallest cranial nerve. And each one of them, they have got different functions to play. Just go through the earlier videos where you're going to get all the informations about cranial nerves. So peripheral nervous system में थोड़ा देख लेना है आपको under cranial nerves. Okay. So इसमें से functions भी अलग-अलग है. हाँ, I told you how to remember. इसमें से ये है olfactory, optic, oculomotor, pathenic, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, accessory spinal, hypoglossal. Now some of them are, इसमें से कुछ है जो motor है, कुछ है जो sensory in actions है, and some of them are having both. We call them as mixed neuron. So how to remember them? Even I have given you the details of that. Fine. Some say money matters, but my brother says big books matter more. Some मतलब ये है olfactory वाला some, and ये some मतलब ये sensory है. Some say मतलब sensory. ये कौन है? Olfactory, optic. Optic मतलब आँख से देखना, तो वो भी sensory. देख के हम कहाँ पे देते हैं? Towards the brain. So that is sensory. M for what? Motor. M for motor. This M for, some say money matters. M for again motor. ये क्या है? Olfactory, optic, oculomotor. This is pathenic. Pathenic मतलब eyes. When it comes with the eyes. Pathenic. So वो भी motor है. But what is this B? B is for both. So it's also called as mixed neuron. Also called as mixed neuron. Which one? The 5th cranial nerve, trigeminal, is a both. Is a mixed. Then facial is also both. ये भी mixed है. Then glossopharyngeal, 9th cranial nerve. Glossopharyngeal is also both. And vagus is also both. Fine. So this is about cranial nerves. There are 12 pairs of cranial nerves. What is left is spinal nerve. Spinal nerve कितने pair हैं? 31 pairs of spinal nerves are there. कितने pair हैं? 31 pair of spinal nerves are there. So there are 31 pairs of spinal nerves. And remember, this is C7. The vertical column formula is C7, T12, L5, S1, under bracket 5, coccyx 1, under bracket 4. This is about what? Vertical column formula. So when we talk about the first vertical column, the C1 is called atlas. It's called atlas. The second vertical column is C2, which is also called as axis. So what do we know? That from in between the two vertical column, one pair of spinal nerves comes out. This is between C2 and C3. If this is skull, between skull and C1 there is another pair of nerves coming out. So क्या होगा? C8, T12. देखो cervical 8 हो गया, 7 में 8 हो गया. Nerves T12, L5, S. ये 5 फ्यूज होकर एक हुआ था. फ्यूज होने के पहले ही 5 nerves निकल गए थे. 5 pair of nerves came out called spinal nerves, and coccyx is 1. So that makes 8 plus 12, 20, 30 and 31. So this makes the 31 pairs of spinal nerves. This makes the 31 pairs of spinal nerves. So that's very important about spinal nerves. Okay, that was all about the complete nervous system. Now, autonomic nervous system में दो तरह के होते हैं. One is sympathetic and one is parasympathetic. Sympathetic जो काम करेगा, parasympathetic just उसका opposite काम करेगा. Sympathetic का function क्या है? Sympathetic का function है जहाँ पे कहीं पे excitatory हो गया, और sympathetic कैपेसिटी में क्या होगा? दोनों का फंक्शन पूरा पूरी ऑपोजिट है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन में इसका फंक्शन डिफरेंट है. जस्ट लाइक इन केस ऑफ हार्ट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हार्ट बीट. कौन? सिंपैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? इट डिक्रीजेस. अगर सिंपैथेटिक डायलेट कर देता है आंख को, इफ इट डायलेट्स द आईज, पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिट्स, कंस्ट्रिक्ट्स द आई, कंस्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल. अगर ब्रोंकस को ये डायलेट करेगा तो वो क्या करेगा? वो कंस्ट्रिक्ट करेगा. So these are the functions, opposite functions, different organs में. Just check out my video on autonomic nervous system जहाँ पे आपको पूरा information मिल जाएगा. The one thing which I must tell you about sympathetic है thoracic or lumbar outflow, parasympathetic है craniosacral outflow, which is very important. Fine. Nervous system as a whole, this topic is very important for you. Mind you, this in one shot I've just given you the idea, because every other video, single video करके आप थोड़ा देख लेना, you'll be getting every other information in all the videos. Click on the I button and see all the videos.
Fine. See you next in the next video. All the very best.